and do find it out by today evening. Okay, and screen visible. Is the screen visible, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. So yesterday we had seen how am I going to convert my analog signal to digital signal, right? Can I get a quick recap? What are the steps to convert my analog to digital? I need an what? I need a system that is called as ADC, right? ADC, What is ADC? analog digital converter. Analog to digital converter, right? Can somebody quickly respond? उसमें क्या क्या blocks हैं? What are the blocks involved in analog to digital converter? What's my first thing that is essential? Sampling and holding. Very nice. Okay, so I need to first sample the signal, right? Sample the signal to get discrete time, right? And then second में क्या करते हैं हम? उसके बाद sampling and hold is I take the sample points, I hold to get the value of those sample points, right? Amplitude of those sample points. Will sampling and hold solve my whole issue? No. No. After that, what do we do? Quantizer. Very nice. We use a quantizer. Quantizer basically to do what? Sampling basically to get discrete time intervals. Quantizer basically to do what? To get values for y-axis. Okay, to get discrete amplitude, right? In short, so or else various quantization levels, and those quantization levels are decided by Number of bits. number of bits, and number of bits are decided by Maximum number of amplitude. maximum amplitude that is there in my signal, right? So that decides my quantization levels. And thirdly, quantizer के बाद last में क्या आता है हमारा coder आता है. Coder. Coder basically to get my bit codes for every for every quantization level. I'll be having a bit code, and that's how I'm going to get my signal value, right? Till here everyone's okay. और उसका reverse procedure DAC में use होता है. So I am not getting into that. So now what is a digital signal? I know what's a digital signal. A digital signal basically discrete in time, right? And discrete in amplitude. Okay, so today we are going to discuss more about a digital signal. As of now, I know how do I get my signal from analog to digital. So my one part is solved, that any analog signal given to me, I know how do I convert it into a digital signal and what is required to convert it into a digital signal. As our syllabus, as our subject is digital signal processing and image processing, we'll be talking about digital signals only. Okay, so now we know this. I'm not getting into this. I know what's a signal. I know what's a waveform. I know that it is continuous in nature. I know what is a continuous signal, what is an analog signal as well, right? Continuous or analog signal. So it is something like this. I can have any example related to a physical world signal that is an analog signal. I know what's a digital signal. So for digital signal, my most important point is how am I going to take those sample points, right? To make it discrete in time and discrete in amplitude. So this is a very beautiful example of an analog signal. That's a continuous signal out here, CT. And to my right, I have got a discrete time signal out here. We are taking sampling and quantization, right? So examples also we know for a DT signal, it could be number of students in a class, a population, like we have seen the COVID cases in a particular state. And so these are my DT signals basically. So discrete time signal. Now we come here. So a discrete time signal is also called as a sequence, students, right? And a sequence in basically a collection of ordered samples, right? And that will have a finite length. Two important things for a discrete time signal. One is I can represent it as an ordered sequence. We will see what is this ordered sequence, right? Number one thing. And second thing is that I will have a finite length to my discrete time signal. I cannot say that my signal
that is discrete in nature. ये मेरा time वाला x-axis है. I cannot say that my time will be from minus infinity to plus infinity. No. I won't be saying that when I'm talking about a discrete time signal. I would have said this when I am dealing with an analog signal or else a continuous signal, right? But for a discrete time signal, I will have a finite length of sequence. So I know that supposing my sequence starts from 0, my sequence will end at some n value. Right? So that is the property of my discrete time signal. That is property number 2. So 2 properties for a discrete time signal. It's an ordered sequence, right? And second is it will have a finite length. Okay. Now we come to some more important signals, right? These are very simple signals. So the first thing that I'm going to talk about is a causal signal, right? A causal signal, it's a signal if it is 0 for t less than 0. Now, if I am drawing a signal at say this is my t, that is time, and this is when t is equal to 0, and this gives me the amplitude value out there, but then a discrete value, right? But for t less than 0, whatever it is, -1, -2, -3, so on and so forth, my value will be 0. Okay, and for t equals to 0 till any positive value of t, I will have some value for this signal. So that's a causal signal, right? So if you find any signal, now say suppose I give you a signal and I say that my signal values are like this. Is this a causal signal? Can somebody confirm? Is this a causal signal जो मैम ने इधर ड्रॉ किया है? Yes, can someone confirm? Is this a causal signal? What's a causal signal? A causal signal is if it is 0 for t less than 0. Now, is the signal 0 for t less than 0? This is 1, this is 2, this is 3. Yes. Is this a causal signal? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Is this a causal signal? जो मैम यहाँ पे ड्रॉ कर रही है, राइट में जो ड्रॉ कर रही है, इज दिस अ causal signal? Yes, come on. It should not take so much of time. Causal signal simple है ना? T less than 0 के लिए value 0 होना चाहिए और T equal to 0 से positive values के लिए कोई भी value चलेगा, 0 भी चलेगा. Yes, ma'am. वो right वाला causal है. Yes, quickly. Ma'am, both are causals. Is this causal, the first one? No. And the second one, is this causal? Second one. The second one is causal. Can somebody? Second one is causal. First वाला causal नहीं है. क्यों नहीं है causal? Because जब t negative हो रहा है तो उसके पास values हैं जो कि non-zero values हैं. Causal मतलब क्या है? Causal मतलब वो signal जब t negative हो जाएगा तो values क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए. मतलब कोई भी डिजिटल सिग्नल जो सिर्फ मेरे पॉजिटिव वैल्यूज के लिए वैल्यू देगा वो causal सिग्नल होगा. 0 या 0 से ज्यादा वैल्यूज के लिए, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए. Right, that becomes a causal signal. So my left hand side of the origin should be 0. Simple. Yes or no? Yes. Yes. Yes, ma'am. Got it. So this is my causal signal. Let us come to a causal sequence. So what's a causal sequence? I know how to write a sequence that is non-zero only for a finite interval of indices is called finite length sequence. We know this. This is a digital signal. A sequence whose samples are 0 valued for negative indices is causal value. Now, please listen this carefully. If I write a signal x of n, ma'am ne kaha tha square bracket for a digital signal, right? If she is writing a sequence n like 1 3 1 7 5, right, and she is saying that my n will hold value greater than equal to 0, is this a causal signal now?
Yes, ma'am. Yes, this is a causal signal because मैम कौन से टाइम इंटरवल की बात कर रही है मैम, 0 या 0 से ज्यादा, दैट इज पॉजिटिव टाइम इंटरवल्स की बात कर रही है, राइट अगर मैम ने यहाँ पे कोई भी सिग्नल ऐसा दिया कि x of -1 gives me a value 3, is this a causal signal? No, ma'am. No, No, ma'am. this is not a causal signal. Got it? I hope you got to know what's a causal signal now. Yes. Yes. Now we come to the another type of signal. One is deterministic and one is random signal. So basic deterministic means what? Any signal that I can retrieve using mathematical form is deterministic signal. जैसे मैम ने लिखा था a cos 2 pi f, right? So this signal is retrieved using a mathematical form. So that's why this is a deterministic signal. राइट सो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल एक पीरियोडिक फैशन में होल्ड करेगा. पीरियोडिक फैशन मीनिंग, सो इफ आई ड्रॉ अ सिग्नल एग्जांपल लाइक दिस, ये एक सिग्नल ड्रॉ किया है मैम ने, ठीक है. इसका एक स्टैंडर्ड पैटर्न है इस सिग्नल के फ्लो का. दैट इज व्हाट इज मीन बाय अ पीरियोडिक सिग्नल, राइट. सो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल वुड बी अ पीरियोडिक सिग्नल इन दैट केस. दैट विल हैव अ बेसिक शेप फॉर दैट सिग्नल. Got it? And the other one is random signal. क्योंकि why does this have a particular shape? Because I have derived this signal from a mathematical form. Let that mathematical form be anything, right? But when I say a random signal does not have any explicit mathematical form, right? It can take any shape of its own. So I can have zeros, I can have a 1 at random, 2 values, 3 values, right? So this is a random signal. Because I don't have a particular shape for this. Why? Because I don't have a mathematical formula to get that signal out. Got it? So that is one more difference between your digital signal. So a signal can be deterministic and a signal can be a random signal. So it is always better to process a deterministic signal rather than processing a random signal. Is this clear? Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. So number one, what did we see? I saw a causal signal. I know that it can have only values for t equal to or greater than 0. And for all negative values of t, it should have a value 0, right? Next, we saw a deterministic signal that is from a mathematical formula. So it will have a definite shape. And random signal, it is not derived from a mathematical formula. So it's a random signal, or else we also call it as stochastic signal, right? Should we move ahead on this note? Can we move ahead? Okay, Yes, good. ma'am. So now we come to what's a digital function and how do I represent it? कोई भी digital sequence, मैम ने कहा था, कोई भी digital sequence जो हम लिखेंगे, digital signal लिखेंगे, उसको हम sequence के form में लिखेंगे, in this form. Right? So now we will see what are those basic forms of writing a digital function, are basically a signal or a sequence. So digital function is nothing but a signal, or else it is nothing but a sequence. So 3 terms for digital signal, right? So we have various functions in that case: unit impulse, unit step. Basic हम पहले आज दो करेंगे, unit impulse function and unit step function. We are going to see how do we write these functions basically. Okay, now we are starting with unit impulse functions. अभी ये याद रखो, मैम अब digital की बात कर रही है, digital signal की बात कर रही है. Digital signal means 2 things. One is discrete in time and another thing is discrete in amplitude. मतलब जो basic structure होगा मेरे signal का, उसके x एक्सिस में टाइम है और उसके y एक्सिस में यू कॉल इट एज x of t, right? An amplitude value for that t, but then I'll have a definite number of sample points here at various intervals. This is one example, and a definite value for my x of t as well. So quantization levels, basic codes, whatever you call it as. राइट अब इसमें आएगा मेरा सिग्नल यहाँ पे जो मैं रिप्रेजेंट करूंगी. सो माय फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन इज अ यूनिट इंपल्स फंक्शन, स्टूडेंट्स, right? A unit impulse function or else a unit sample sequence is defined as a sequence with values. Now please understand this. This is how I denote a unit impulse function.
a square bracket to denote that my signal is digital signal, right? And this is how I represent a digital sequence. Okay, अब unit impulse function वो है कि जब when my n is equal to 0, n or t, so I can write this as unit impulse function at time interval t as well. Okay, at time t, when t is equal to 0, I get the value as 1. This is when t is equal to 0. Okay, and otherwise it holds a value that is what? 0. Simple. Yes, so इसका representation कैसा होगा? For now, see this. This is my x-axis, that is you take it as t or n. This is my y-axis, that is a impulse function at value t or at value n, whatever. Right? At when my t is equal to 0, I should have the value as 1. 1 in y-axis, right? And everywhere else I should have a value 0. Clear? Is this clear? Unit impulse function. Yes, ma'am. Okay. Yes, And if yes, unit impulse function is clear, can somebody tell me कि ये causal है कि non-causal है? Is this a causal? Causal. Yes, it's Causal. a causal signals. It's a causal signal. Got it? Because negative values के लिए my only condition for causal is for all the negative t values I should have a value 0. Simple. Yes. So unit impulse function, as the name suggests, impulse. It is going to have an impulse response only at t value equals to 0, wherein I'm going to get a value as 1. Otherwise, I'm going to get a value as 0. Why unit? Unit money, my amplitude will be 1. Clear? Shall we move further? Yes. Okay, and if I can move further, so a unit impulse function has an amplitude of 0 at all the samples except n equals to 0, where it has a value 1. We know this. Okay, now can somebody tell me if, so I am drawing a unit impulse function here at value 0, then 1, then 2, then 3, and minus 1, minus 2, minus 3. Okay, what is it saying? कि 0 पे क्या होना चाहिए value? 1 होना चाहिए value, right? So this is impulse function at t, and rest everywhere it should give me a value 0, right? So can somebody tell me what is the value at t0? Impulse function at t0. How do I read this? Now please listen students. Impulse function at t value 0. Bracket का variable क्या है? t है. तो मैम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रही है? मैम कंसिडर कर रही है impulse function when my t is equal to 0. What is the impulse function value when my t is equal to 0? 1. 1. 1. 1. Right. Okay. What is the impulse function value when my t is equal to 3? 0. 0. Correct. So this is how I read it. So when my t is equal to 3, my impulse function says that the value is 0. What is the impulse function value when it is minus 2? 0. 0. 0. Got it? Yes. Is this clear now? How do I determine the impulse function? And how do I determine the signal values at different t values given to us? Okay. This is the basic example. Any doubts here? No, ma'am. Okay. Clear. Okay, now please listen this. So this is when I have a scaled unit impulse function. So what do I mean by a scaled unit impulse function? ये scaling हमने computer graphics में भी किया है, ठीक है? मेरा basic impulse function क्या बोलता है? मेरा basic impulse function बोलता है कि जब t 0 है तो मेरा value क्या है? तो what is the value? When t is 0, the value is 1. I'm going to write 1 here directly without writing anything else. Otherwise, my value is 0. Right, agreed everyone. So I am going to draw a signal for the impulse function, taking various time intervals into consideration, but I am scaling it up by 4. तो मैं impulse function को किससे multiply कर रही हूँ? 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो. बट ये बताओ कि ये इम्पल्स फंक्शन आउटपुट क्या देगा? ये एम्पलीट्यूड आउटपुट देगा? yes or no? So what am I doing basically? I am multiplying all the amplitudes by which value? What scaling factor am I multiplying?
4, 4. right? Four, Now four. say suppose मैम ने किया 4 impulse function value 0, क्या रिजल्ट आएगा मैम को? 0. 4 multiplied by impulse function at 0. 4. 4, 4 4 multiplied by impulse function at 0 में क्या वैल्यू है मैम का? 1. 1. तो रिजल्ट क्या आएगा? 4 रिजल्ट आएगा. 4. गॉट इट. अब मैम अगर 4 impulse function वैल्यू एट -1 कर रही है, 0. 0. 4 multiplied by 0 that gives me a 0. समझा? अब ये किसका रिजल्ट आया? impulse function at 0. So where will this result go? X of 0. Agreed. ये किसका रिजल्ट आया? impulse function at time -1. So where will this result go? X of -1. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. how do I draw the output for this? Time interval तो वही रहेगा 0, 1, 2, 3, 4 and out here will be -1, -2, -3, right? But क्या हो जाएगा? Simple. All the amplitudes will be multiplied by 4. So if I take this sample and I multiply it by 4, I'll get a 0. If I take this sample and I multiply it with 4, I get a 0. If I take this sample, I multiply it with 4, I get a 0. But if I take this sample and multiply it with 4, I'll get a 4. 4. 4. और बाकी सब क्या मिलेगा मैम को? 0. 0. अग्रीड. सो मैम ने क्या किया? मैम ने स्केलिंग किया. किस पे किया? यूनिट इम्पल्स फंक्शन पे स्केलिंग किया. यूनिट इम्पल्स फंक्शन ये ही रहने वाला है, आप चाहे जो कर लो. इट इज गोइंग टू रिमेन दिस ओनली. So you will have to remember, okay, ma'am is saying unit impulse function, तो सबसे पहले let us just draw a unit impulse function and then apply whatever ma'am is saying. ma'am scaling बोल रही है तो scaling apply कर देते हैं उस पे. Got it? तो सिर्फ स्केलिंग मेरा t equals to 0 पे जो भी वैल्यू होगा उस पे स्केल होगा, बाकी सब वैल्यू 0 हो जाएगा. अग्रीड? क्लियर? Yes, ma'am. Okay, good. Yes, so this is the output that we would have got, and that's the same output that we can see. We are not getting into this as of now. अच्छा चलो ये भी कर लेते हैं. अब मैम किससे स्केल कर रही है? -2. -2 से कर रही है. तो मैम क्या आउटपुट एक्सपेक्ट करेगी? सिर्फ आउटपुट लिखते हैं यहाँ पे. 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3. ये मेरा टाइम वाला है, तो ये आप n ले लो क्योंकि यहाँ पे n के बेसिस पे दिया है. ठीक है, तो 0 पे मेरा इम्पल्स सिग्नल क्या है? 1 है ना? अब मैम उसको किससे स्केल कर रही है? -2. -2 इज माई स्केलिंग फैक्टर. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आउटपुट क्या आएगा? Yes, yes, come on. Very -2 simple. for 0. -2 For 0. -2 for 0. No. What output am I going to get? मेरा ये इनपुट वेवफॉर्म है स्टूडेंट्स, ये इनपुट सीक्वेंस है. तो आउटपुट सीक्वेंस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग? क्या आएगा? -2 and 0. -1, 0. -2 and 0. -2 on 0. मतलब what are you trying to tell me? So it is -2 on No, ma'am. -2 and 0. -2 and 0. मतलब यहाँ पे आउटपुट कैसे ड्रॉ करें? How do you want me to? मैम ने इनपुट ड्रॉ किया. Did you understand the input? This is impulse function, no? At t. One At L. down हो जाएगा 0 पे -2. 0 पे क्या आउटपुट आएगा? -2. -2. ओके. और बाकी सब जगह पे 0. 0. Correct? Understood? Any doubts in this now? Clear, ma'am. Clear? Yeah. No? Everybody in the class clear? Scale unit impulse function. Scaling factor मैम जो भी देगी, तो at n equals to 0 जो भी है वैल्यू 1 है, सिर्फ उस पे स्केलिंग होएगा, बाकी सब वैल्यू 0 हो जाएगा. Clear? Right? So this is how I write the input sequence. अगर मैम ने ये एग्जाम्पल चूज किया है तो ठीक है. तो प्लीज ध्यान दो मैम इनपुट सीक्वेंस कैसे लिख रही है.
क्या बोला था हमने? डिजिटल सिग्नल जो भी होगा उसका एक फाइनाइट लेंथ होगा, वो इनफाइनाइट नहीं होगा, तो इसका फाइनाइट लेंथ है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इनपुट सीक्वेंस, दैट इज योर इम्पल्स फंक्शन एट n, right? Now my n varies from -3 to +3, yes or no? Yes. Yes. ये Yes, समझा ma'am. सबको? मैम ने क्या लिखा? n varies from -3 to +3 and my sequence goes like this, okay? तो अब मैं इसका आउटपुट सीक्वेंस लिख रही हूँ। आउटपुट सीक्वेंस मैम x ऑफ n से डिनोट कर रही है, तो मैम आउटपुट सीक्वेंस क्या लिखेगी? कोई जल्दी से बताएगा इसका? 0 0 0 वेरी -2 गुड, 0 0 0 0 0 -2 0 0 0, करेक्ट, यस। सो दिस इज क्लियर कि मेरा जो इनपुट सीक्वेंस है, जो भी मेरा डिजिटल सीक्वेंस है, वो ऑर्डर्ड होना चाहिए और वो फाइनाइट होना चाहिए, क्लियर? तो मैं इनपुट भी लिख सकती हूँ एंड आई कैन राइट द इक्विवेलेंट आउटपुट आल्सो, व्हाटएवर इज द प्रोसेस्ड आउटपुट। इज दिस ओके? Yes, ma'am. कैन वी Yes, प्रोसीड? ma'am. ओके, ये आउटपुट आएगा उसके टाइम पे, सो वी आर नॉट, वी विल डू दिस लेटर, शिफ्टेड वाला, shifted while I am not touching this point as of now, and so now we are turning to unit step function students. Unit step हमने अभी क्या किया इसके पहले? Unit impulse. Unit impulse function, okay. So unit step, unit मतलब पहली चीज याद रखो, unit मतलब मेरा एम्पलीट्यूड क्या होगा? 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। Step means what? Now step means that for my n greater than or equal to 0, when my time is 0 or greater than 0, I'll have the value 1, otherwise I'll have the value 0. That means what? Now say suppose I'm drawing a time interval from 0 1 2 3, and for negative values also, -1 -2 -3, this is n or t, whatever we take it as. यहाँ पे n लिया है तो n ही लेते हैं, okay. It says that my signal will have a value 1 when the time is 0 or greater than 0. So this is my signal value u of n, right? This will hold a value 1 for time 0. For time 1 it is 1, for time 2 it is 1, for time 3 it is 1. For negative value of time it is 0. 0. समझा? ये मैम ने क्या ड्रॉ किया? अब इसका पैटर्न देखो, अगर आप इसका पैटर्न देखोगे, सिग्नल का पैटर्न देखोगे, तो ये पैटर्न फॉलो करता है ऐसा, है ना? So that is why the name is unit step function. We take a step at t equals to 0. Clear? Clear? Yes, सिग्नल ma'am. समझा? सिग्नल समझा ना? कॉजल है कि नॉन कॉजल है? ये Causal. कॉजल है। डिटर्मिनिस्टिक है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक है? Deterministic. डिटर्मिनिस्टिक है, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसको डिफाइन करने का। वेरी नाइस, हाँ, ओके, सुपर। चलो आगे बढ़े, अब इस पे करते हैं मैनिपुलेशन। अंडरस्टूड? नो? Yes. Okay, nice. So but this we know that for positive and 0 values of t, I'll get a value 1, otherwise I'll get a value 0. Okay, now let us just do this. So this is my signal, this is my, and उसको हम denote कैसे करते हैं? u, unit step function is u and impulse function is by this symbol. Yes, so this is my unit step function, right? अब unit step function at -1 value क्या आएगा students? 0. 0. 0 0. At 0 क्या आएगा value? 1. 1. At 1 क्या आएगा value? 1. 1. Clear? Yes, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आपकी सिग्नल रीड करना आता है मुझे at various intervals, whatever is given to me, right? Shall we move further then? Yes, ma'am. Okay, now if I have a signal u of n, right, and I am scaling it by 3, पहले u of n ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 sorry 2 and a 3, so this is n and this is -1 -2 -3, ठीक है।
So what is my signal value? At 0 I'll be having 1, at 1 it is 1, at 2 it is 1, and at 3 it is 1. Rest everywhere it is 0. अब कोई मुझे यहाँ पे बताएगा इनपुट सीक्वेंस कैसे लिखूं मैं? Mathematically, how can I write my input sequence in terms of u of n? Input sequence कैसे लिखूं? 0 0 0 Very 1 good. 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1. 4 times 1, no? Right. And you want to say something about n as well? Finite sequence है ना, तो n एक value hold करेगा. -3, -2, -. Oh, so it ranges from -3 to +3? Yes. Clear? Yes. चलो अब हम लिखते हैं इसका आउटपुट सपोज हम x of n में ले रहे हैं, है ना? आउटपुट x of n में ले रहे हैं, तो आउटपुट x of n बोला है कि मुझे 3 times u of n करना है, 3 times u of n करना है. So what am I going to do? Scaling है ना? So scaling मतलब every signal value will be multiplied by 3. 3. So what is the resultant output that I'm expecting? 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 times 3. 4 times 3. है ना? Again my n will be varying from -3 to +3. टाइम तो चेंज नहीं किया हमने सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड चेंज किया. तो रिजल्टेंट आउटपुट कैसे ड्रॉ करें? 0 1 2 and 3, -1 -2 and -3. तो मैम आउटपुट कैसे ड्रॉ करेगी? At -3 I'm going to get a 0, -2 a 0, -1 a 0, but at 0 I'm going to get the value as 3. 1 पे 3, 2 पे 3 और 3 पे 3. This is how I have scaled my unit step function. Input क्या था? 1 1 1 1. Output क्या आया? 3 3 3 3. Clear? Is this clear? So this is how I'm going to write my input sequence and I'm going to write my output sequence. Understood, students? Yes, ma'am. Scaling the unit step function. And so I'm not going to touch upon the shifted signal as of now. So we are not touching this. Okay. Unit step function clear? Yes. Okay. Okay. So this is how do I denote a digital signal? We have already seen this. We denote it using a square bracket, right? And n or t. N या t होगा मेरा क्या? Time interval where I'm going to pick up the samples. चलो अब हम करते हैं टाइम शिफ्ट. हमने क्या किया? हमने हमने इम्पल्स किया और हमने सेकंड क्या किया? यूनिट इम्पल्स किया और यूनिट स्टेप किया, है ना? और थर्ड चीज हमने की कि हमने स्केलिंग भी देखा उस पे कैसे करते हैं, राइट? तो स्केलिंग अल्टीमेटली क्या इफेक्ट करता है? स्केलिंग अल्टीमेटली चेंजेस व्हाट? इट चेंजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल. यस और नो? डू यू एग्री? Yes. ओके. Yes. अब हम देखेंगे कि हम उसको टाइम शिफ्ट में कैसे चेंज करें, right? So time shift meaning that I am going to change the I'm going to shift that signal in time interval, right? So we are going to play around with the intervals out here and just see what is happening. Okay, so a digital signal or else a digital sequence that is given to you, we can modify it in terms of time shift. Okay, so time shift means what? That I can either perform a right shift or else I can perform a left shift to the signal, right? अगर ये आपका origin है, that is when 0 value, and this is 1 2 3, this is -1 -2 -3. Now let us just take this as n because this guy is taking this as n, so my time is with respect to n. Okay, now if I say that I am doing a right shift to the signal. A right shift to the signal means what? Now please understand this. At 0, suppose my value is 1. And rest everywhere it is 0. तो ये मैम कौन से सिग्नल की बात कर रही है?
यूनिट इम्पल्स। यूनिट इम्पल्स सिग्नल की, वेरी गुड। और मैम ने बोला कि मैम को इसको राइट शिफ्ट करना है 1 से। राइट शिफ्ट करना है 1 से, मतलब मैं आउटपुट क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ? आई एम गोइंग टू ड्रॉ द आउटपुट ऑन दिस ओनली, राइट? आई एम गोइंग टू शिफ्ट दिस टुवर्ड्स राइट बाय 1, है ना? तो मैम का 1 किधर आ जाएगा? इधर, राइट? जो यहाँ पे 0 था वो यहाँ पे चला गया, जो यहाँ 0 था वो यहाँ चला गया, और जो यहाँ 0 था वो आगे चला जाएगा, और ये 0 यहाँ पे आएगा। दिस 0 विल शिफ्ट हियर एंड दिस 0 विल शिफ्ट हियर। तो मैम ने क्या किया? मैम ने पूरे सिग्नल के पैटर्न को 1 से शिफ्ट किया, राइट? ओरिजिनल सिग्नल, योर ओरिजिनल सिग्नल वाज हियर। मैम ये ब्रैकेट बना रही है टू मेक यू अंडरस्टैंड। दिस वाज माय ओरिजिनल इनपुट सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल, बट मैम ने उसको क्या किया? मैम ने उसको 1 से शिफ्ट किया। In which direction? In right direction. Yes or no? Agreed? So Yes. this is what I mean by shifting a signal. In which domain? In my, that's why I call this as time shift, because I am shifting the time intervals out here. Got it? Got it? And similarly I could do a left shift also. Yes, left shift मतलब ब्रैकेट के हिसाब से बताओ कि सिग्नल कहाँ चला जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखो, मैम का इंटरवल पहले क्या था? इनपुट इंटरवल क्या था? -3 to +3। यस और नो? Yes, Yes. ma'am. जब मैम ने इस पे शिफ्ट अप्लाई किया तो इंटरवल क्या हो गया? -2 to 4। -2 to वेरी 4. गुड, -2 to 4 हो गया। अब मैम अगर बोल रही है कि मैम इसको अब लेफ्ट शिफ्ट करेगी 1 से, तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? -3 to 3। नहीं, इसको नहीं, ओरिजिनल सिग्नल को। -4 to 2. -4 to 2। ऐसे हो जाएगा ना? So it will be from -4 to 2. Clear? Yes, ma'am. Clear, no? So this is what we mean by shifting a signal. So now please understand, right shift means that to my original signal, I am subtracting some value. Then you get a right shift. It functions in a reverse fashion. Simple याद रखो, अगर right shift करना है, so I'll have values in the terms of n minus k. This is for right shift. अगर left shift करना है, तो I will have values in terms of n plus k. Got it? Then it performs left shift. Clear? Is this clear? If you solve this mathematically, no, x of n minus k, you will understand that. X of n is my original signal. उस पे मैंने -2 अप्लाई किया, तो उस पोजीशन पे -2 का वैल्यू आया ना? See this. If I say that my resultant output x dash of n is equal to x of n minus k. ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैम ने n का वैल्यू 2 लिया और k का वैल्यू 2 लिया, मैम को 2 से शिफ्ट करना है, कहाँ पे शिफ्ट करना है? n माइनस के लिखा है ना, तो मैम कहाँ शिफ्ट कर रही है? राइट में शिफ्ट कर रही है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2 minus 2 0। 0। ये कौन से सिग्नल का वैल्यू आया? 0 का वैल्यू आया, और ये 0 का वैल्यू किधर जा रहा है? 2 पे जा रहा है। तो 0 का वैल्यू किधर जा रहा है? 2 पे जा रहा है, तो मैम राइट शिफ्ट कर रही है। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Anybody else who can confirm? समझ आया ये? Yes, ma'am. Right. So right shift के लिए I will have a pattern of my signal saying that my current value minus how many shifts am I going to do? Right. And left shift says that the current value plus how many shifts am I going to do? Got it? It does not go that right shift करना है तो ये plus होना चाहिए, नहीं, वो सिग्नल के लोकेशन के हिसाब से सोचो, it should be n minus k, and for left shift it has to be n plus k. Now say suppose I'm saying that I'm doing n minus 2, then what am I doing actually? X of n minus 2, I am shifting my x of n 2 steps in which direction? Right direction, because it is x of n minus 2,
right? But the pattern says that if it is n minus 2, I'm shifting my original signal x of n towards which direction? Right direction. By how many steps? By 2 steps. Clear? Second says that x of n plus 3. अब क्या कर रहे हैं हम? n plus 3. I am shifting in which direction? Left. By how many steps? 3. 3 steps. Clear? Is this clear? Yes, ma'am. हाँ, let us just see one numerical and then you will understand. Okay, चलो इसमें मुझे x of 0 का वैल्यू बताओ पहले क्या आएगा? What is the value of x of 0? Signal is given to you. 0.25. Signal is given to you here. 0.25. Five. Okay. And what is x of 5? 0.5. Good. Is this signal causal or non-causal? Causal. Causal, because अभी तो मुझे negative values दिया नहीं है, but ideally if it is not given to you, we assume that the values are 0 out there, right? Okay. Yes, ये unit impulse, unit step है क्या? उसमें से कुछ है ये signal? No. No. Okay, so we know something about this. Now let us just see. I know that x of 0 is 0.25 and x of 5 is 0.5. Now let us just see x of n minus 1. क्या करना है x of n minus 1? मतलब टाइम शिफ्ट करना है. Right shift. हाँ, वेरी गुड. टाइम शिफ्ट करना है, बेसिकली राइट शिफ्ट करना है. बट राइट शिफ्ट करना है मतलब क्या करना है? कितने स्टेप से करना है राइट शिफ्ट? 1 step. 1. राइट शिफ्ट बाय 1 स्टेप. राइट. अभी x of 0 पे वैल्यू क्या है? 0.25. वो एक स्टेप आगे चला जाएगा. यस. सो एक स्टेप आगे जाएगा तो मेरा वैल्यूज किधर आने वाला है? कैन समवन कंफर्म? एक ये One. वाला 0 1 पे जाएगा, 1 2 पे जाएगा, 2 3 पे जाएगा, 3 4 पे जाएगा, 4 5 पे जाएगा. राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.25. यस. 2 पे क्या आएगा? ये वाला सिग्नल जो यहाँ पे है. 3 पे क्या आएगा? Am I doing this correct? 0. 3 पे 0. 4 पे ये वाला वैल्यू आएगा. 5 पे ये वाला वैल्यू आएगा. Got it? No? What am I drawing? वो नीचे ड्रॉ भी किया है. Got it? So x of 0 will be 0 now because previous to this I have got nothing, so I have take the value as 0. Yes. अगर मैम के पास नेगेटिव में भी वैल्यूज होता तो वो वैल्यू यहाँ पे आता. Right? So my 1 gets a value of 0.25 जो पहले 0 का वैल्यू था. My next value is so on and so forth. Is this clear now? So we are shifting my signal right by 1 position, by 1 step. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now can somebody tell me what is x of n minus 2? Shifting right by 2 steps. Shifting right by 2 steps. Can I do this? अच्छा चलो ऐसे करते हैं. एक सिग्नल देते हैं. So it is 0.25. ये एक्चुअली में हम ऐसे करते हैं 0.75, 0, 0.1 and 0.3. Suppose this is my signal that is given to you and I tell you shift right. ठीक है, shift right by 2 positions. x of n minus 2 करो इसका. तो ये है आपका इनपुट x of n. राइट. तो x of n minus 2 क्या आएगा इसका? 0, 0. ओके. 0.25. 0.25, 0.75. okay, 0, 0.1. 0.1, 0.3. Right? This is how you actually perform it. And then you write the locations. ठीक है. तो अभी locations कैसे लिखोगे आप जरा बताओ मुझे. Locations मतलब from where did I start, students? I started from which value? 0. This was 0, no? This was 1. This was 2. This was 3. This was 4. अब क्या हो जाएगा? 0, 1, 0 to 6. 2, 3, 4, 5, 6. Got it? Yes, ma'am. Clear?
Clear? No Yes. shifting. Clear? Did we understand Yes, shifting? Okay. चलो अब एक चीज और देखते हैं. This is new. So I know how to get the signal value. I know how to do shifting. Now we will see how to do this. Okay. अब ये बताओ कि अगर मैम सिग्नल ले रही है x of n और मैम ने परफॉर्म किया 2x of n और मैम ने परफॉर्म किया x of 2n, ये ओरिजिनल सिग्नल है. ठीक है. मैम इज परफॉर्मिंग 2 times x of n and मैम इज परफॉर्मिंग x of 2n. Is there a difference between both? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. And what is the difference? First वाला क्या है? We are scaling in first. ये स्केलिंग था. ठीक है. स्केलिंग what? Scaling the amplitude of the signal Yes, ma'am. 2 times. Now what is this x of 2n? हमें क्या दिया है? x of n दिया है. हम उसको क्या कर रहे हैं? x of 2n कर रहे हैं. That means what am I doing? Resultant सोचा है कभी? x of n is equal to x of 2n. अगर मैम ने n का वैल्यू 0 लिया, सॉरी n का वैल्यू सपोज 1 लिया, तो x of 1 क्या आएगा? x of 2 2 है ना. अगर n का वैल्यू 2 लिया तो x of 2 क्या आएगा? 4 x of 4. Right? So I am picking up which value, students? All the even values? Yes. Yes or no? Yes. Yes, right. So what is x of 2n then? X of 2n is when I am selecting the alternate samples from the signal x of n. ठीक है. तो अगर n 0 है तो मैं कौन सा सैंपल चूज करूंगी? x of 0 is equal to x of 0. फर्स्ट सिग्नल वैसे ही रहेगा. Agreed. So this is my Yes. input x of 0. So my output is x of 0 only. What happens when my n is 1? So x of 1 क्या आया मुझे? x of 2. x of 2 क्या है? 0 है. तो वो मेरा किधर आएगा? x of 1 पे आएगा. Right? What is n 2 पे क्या आ जाएगा? x of 2 gives me x of 4. What is x of 4? 0.35 suppose. So that is x of 2. Clear? तो मैम कौन से सिग्नल्स ले रही है? मैम हर ऑल्टरनेट सिग्नल पिकअप कर रही है. राइट? अग्रीड? Yes, ma'am. और Yes, वो कहाँ ma'am. पे जाएगा? वो मेरे हर एक n वैल्यू पे जाएगा. Yes? Clear? So this is x of 2n. Clear? yes ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now can somebody tell me x of 3n क्या आएगा यहाँ पे? ये इनपुट है. What will be x of 3n? Please don't see the output. X of 3n. Select every third sample. यहां से करते हैं. फर्स्ट सैंपल आएगा कि नहीं आएगा 0 पे? No. 0 आएगा. 0 आएगा ना, मतलब ये वैल्यू वैसे ही रहेगा. Yes. यस. इधर क्या डालें? x of 1 पे कौन सा वैल्यू डालें? थर्ड का. थर्ड Third. का वैल्यू डालते हैं. ठीक है. मैम इधर ही आउटपुट ड्रॉ कर रही है. 2 पे क्या डालें? 6. 6 2 का. पे 6 का. 6. 3 पे 9. 9. 9 का. गुड. 4 पे 12. 12. 4 पे 12 का. दैट इज व्हाट? 0. इज दिस क्लियर? Yes. राइट. तो मैम 0 पे 0 का ही वैल्यू डाल रही है. मैम 1 पे 3 का वैल्यू डाल रही है. यस. मैम 2 पे उसके 6 का वैल्यू डाल रही है. मैम 3 पे 9 का वैल्यू डाल रही है और मैम 4 पे 12 का वैल्यू डाल रही है. राइट? बट उसके साथ साथ एक चेंज और हो रहा है ना. एक चेंज क्या हो रहा है? इसका इंटरवल देखा आपने प्रीवियस केस का? आफ्टर एवरी 1 यूनिट था. yes or no? Time interval. Yes. See this sampling interval. This was after every 1 unit. No? बट इसमें मैम ने क्या किया? सैम्पलिंग क्या कर दिया? 2n कर दिया. तो मैम ने टाइम इंटरवल क्या चूज किया? 2 का चूज किया. तो उसका टाइम इंटरवल बढ़ गया, मतलब उसका डिस्टेंस भी बढ़ गया ना. सी वैल्यूज वही है, 0 1 2 3 ही है. बाय यूनिट स्टेप ही हो रहा है इंक्रीज, बट टाइम इंटरवल हैज इंक्रीज. नो? क्लियर? सिमिलरली यू जस्ट चेक आउट हियर.
हमने क्या किया, हमने 3n किया, गॉट इट। तो जस्ट सी, 0 पे मैम ने आउटपुट लिया, ठीक है, फिर मैम आउटपुट कहाँ पे ले रही है, 3 पे ले रही है ना, एक्चुअली वो जा कहाँ पे रहा है, वो 1 पे जा रहा है। सी दिस, गॉट इट, अंडरस्टूड, दैट इज आफ्टर एवरी 3 intervals. सी दिस and see this. Got it? So please remember, how are you going to plot it as well? I cannot plot this output as 0, 1, 2, 3 at the same intervals, because my intervals are not the same. My interval has increased by 3. Clear? Is this clear to students? Yes, ma'am. अगर ये 4 पे होता तो मैं कैसे ड्रॉ करती आउटपुट, पहले मैं 0 पे ड्रॉ करूंगी, फिर 4 वाले इंटरवल पे जाके सेकंड ड्रॉ करूंगी, फिर 8 पे जाके थर्ड ड्रॉ करूंगी. गॉट इट? नो? Yes, ma'am. Okay. Is this clear? So by this, we come to an end for our today's session. So please keep in mind whatever we have done today, unit step, unit impulse, right? How do I scale a signal? How do I do time shift to a signal? And how do I take different sampling intervals to the signal? Right? याद रहेगा सबको?